Hello viewers, welcome to my YouTube channel Learning and Sharing. In this particular video, we will look at the climate or climatic condition of the Sindh province. As you all know, we have been discussing in last few videos about the different characteristics or different aspects of the Sindh province. So we had already discussed the land use, land area and administrative units of the Sindh. We also discussed the physiography of Sindh. In this particular video, we'll discuss the climate of Sindh. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे which factors influence the climate or in other words we say what type of climate we have in Sindh province and what factors are being influencing or playing an important role in making the climate of the Sindh. We also see the special characteristic or elements of climate such as temperature, pressure, humidity and the rainfall of Sindh. So stay tuned with me. I will have a very interesting lecture on that. I hope you will get much needed knowledge about the Sindh province. So let's start the lecture when we have slides on the climate of the Sindh. So the province of Sindh is situated in the subtropical region. So if you remember that we have a different latitudinal difference in terms of climate of the world of different regions. So Sindh comes in the subtropical regions. I use the Pakistan comes in subtropical regions, and you might be well aware of the characteristic of characteristic of climate in that area. So when we look at the climate of Sindh is easily defined by aridity except the southern maritime climate. So what is being said that throughout the Sindh, if you look at the Sindh, look at the climatic condition of Sindh, it has been dominated by the aridity, khushki. So aridity dominant except aspect have climate except the few parts of the southern part of the Sindh. So kuch hisso mein where we have a maritime climate. The complete area is receiving the low amount of rainfall while having the high temperature and humidity. So if you look at here, the Sindh province is getting a very low amount of rainfall and high temperature and humidity if you compare the rest of the regions of Pakistan. So throughout the year, numbers of hot summer days are very high as compared to the winter days. And also the number of rainy days are low and may vary year to year. तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो summer days हैं, जो summer period है, वो it's been more longer as compared to the winter और यहाँ पे बरसात भी बहुत कम होती है. And before going to details, the climatic elements of the Sindh, particularly, we will see what does it mean by the climate. बहुत सारा को शायद पता ना हो तो हम देखें climate है क्या. So climate is the condition of atmospheric element. It's a particular location over a long period of time. It is an average summation of atmospheric components which is influence over given periods or given location. I have discussed and defined many times the climate. So climate is the atmospheric condition at a particular place for the longer period. So when you look at the different atmospheric elements such as pressure, air pressure, winds, humidity, rainfall, temperature, in सबको मिला के climate बनता है, and climate is for the longer periods. So the elements, as I told you, solar insolation, temperature, pressure, humidity, and precipitation. Climate is a permanent with slight changes maybe after a long time. So if you differentiate between climate and weather which is the short period or temporary condition of the atmospheric components, while the climate is for the longer period, it's a permanent. So it's been changed, but it's been changed after quite long times. When we have a certain type of changes, then it's going to influence the climate of that area. The factors which has been affecting the climate of any regions, they are, you can say we have an elevation, nearby water, topography, ocean currents, latitudes, and vegetation. So these are the factors which always influence the climate of any region. यानी कि ये factors जो हैं, they always influence or play an important role in making of climate of any region. तो जहाँ भी आप देखेंगे कि ये elements बहुत important हैं. तो जब हम we will see the rainfall or the temperature or humidity, certainly these elements have some sort of influence or contribution. So
These are being influenced or controlled by, elevation is the height. Uh, so climate zone coincide roughly with the elevation ranges. Nearby water, meaning how much your land is being closer with the water body. So ocean and seas are always a great influence of the climate of it. And it is, even the fresh water, such as the river, they have also influence. So elevation, height, nearby, water, closeness of the water, topography, the ground, the physiography or ground characteristic of any place. It's also been influencing the climate of, if you have a vegetation or you have a barren land or you have a water bodies or you have a glaciers or you have an agricultural land or you have a housing. So these top of topographic characteristics always impact on the climate of the region. Oceanic currents, mostly I'll say mainly the climate of the world or global climate or even the local climate is being influenced or being made by the oceanic currents. Latitudes, where you are being located. wo jagah kahan pe. So whether you are being closer to the sun, it's also been defined the way the relationship between the sun and the land. So and the vegetation also. So these are the factors. These factors also influence the climate of the Sindh. So we'll see in further. The overview of the Sindh's climate. The climate of Sindh varies with the geographical location and is further influenced by the province's physical features. So Sindh ka jo province, Sindh ka jo climate hai, certainly is being influenced by its geographical location, that where Sindh is being existing. कि जहाँ पे सिंध मौजूद है, उसकी जो location है, उसका influence है climate पे, and further influenced by the province physical features. ये जो physical features हैं, इनका भी बड़ा role होता है climate बनाए. So daily range of temperatures are variable with the minimum range being in the coastal region. So there has also been a variation in the temperature, mostly is being found in the, and the minimum is in the coastal region, because coastal region have an influence of wind or the water. So ये जो physiography है Sindh की, like these are the mountainous ranges in the west, and the middle part of the Sindh is based on Indus plains, and the eastern part is the drier as on the base of the deserts, and the southern part is the water bodies or the delta or the coastal region of the Sindh. So certainly this geography, this topographical character of physiography has an influence on the climate of the Sindh. So this is the climatic regions of the Sindh, where we have, you can see from the color shades, the red color showing the very hottest summer and mild winter. So this area is a hottest summer and the mild winter. So Shikarpur and Ghotki, we have a closer. Then again we have this Ghotki, we have a Sakkar, we have a Khairpur. So these areas experiencing the hot summer and the mild winter. जहाँ पे गर्म जो है summers होते हैं और mild winters होते हैं, यानी कि जो winters होते हैं वो इतने ज़्यादा severe नहीं होते, cold या cool नहीं होते, वो mild होते हैं. Then we have another areas. So this is the middle part of the Sindh where you can experience. This is a semi-arid. Upper part is a hot, very arid, hot and very arid. This one hot and very arid. This place is the upper Sindh, and the middle part is a hot arid. This one is a hot arid. So what is the characters of hot arids? It's warm summer and a mild winter. So यहाँ पे जो summers होते हैं, they are warmer as compared to the northern part of the Sindh. तो यहाँ पे जो summer है वो slightly cooler है, थोड़े बहुत ठंडे हैं यहाँ पे. Then we have a coastal area. This is the southern part of the Sindh, is a coastal area where we have warm summer and mild winter. Warm summer or mild winter. It's because the influence of water. So यहाँ पे पानी मौजूद है. This is always influence this region. तो यहाँ पे जो आपके पास जो winter होते हैं, जो सर्दियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हवाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं और हवाओं की वजह से वो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा शेटर्ड रहता है, यानी कि टेम्परेचर इतना वो नहीं होता, गर्म नहीं पड़ता या इतना हाई नहीं पड़ता. Again, so we will start from the rainfall. We look at the situation of rainfall. So rainfall in Sindh is scanty and erratic. Means scanty means thodi and erratic irregular. So here rainfall in this scanty is a very small amount of rainfall, and
that amount is very erratic, irregular. We are not being sure. Sindh lies between the two monsoons, the southwest monsoon from the Indian Ocean and the northeast or retreating monsoon deflected toward it by the Himalayan mountains. So Sindh जो है ना दो मानसून में आ जाता है, एक है साउथ वेस्ट मानसून एंड दूसरा है आपका ये जो नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट समर मानसून. सो पाकिस्तान receive the rainfall through two, monsoon. One is the southwest monsoon and another the northeast. So this is the northeast monsoon. Northeast monsoon bring more rainfall to the Pakistan, but particularly in northern part of Pakistan. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the Bay of Bengal. तो यहाँ से ये हवाएं चलती हैं, ये हवाएं पहले बांग्लादेश, उसके बाद ऊपर इंडिया में दाखिल होकर फिर पाकिस्तान के नॉर्थ में आती हैं पहले. सो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, they receive more rainfall than the rest of. तो अगर ये नीचे जब ये नीचे हैं तो बहुत ही कम बरसात सिंध में पड़ती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो this is the northwest. So it misses the influence of southwest monsoon, while the northeast monsoon don't extend much beyond the Ganges Basin. तो यहाँ पे क्या है, अगर ये हवाएं यहाँ से चलना शुरू करती हैं तो पहले इंडिया में, फिर बांग्लादेश में, फिर बांग्लादेश से फिर वो पाकिस्तान में होती, और पाकिस्तान के नॉर्थ में होती, फिर नॉर्थ में ये बरस के ये क्लाउड्स जो है ना, ये यहाँ पे बारिशें करके ये फिर ये नीचे साउथ की तरफ आता है. तो जब तक ये सिंध में पहुंचे तो ये हवाएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं या कम पड़ जाती हैं. तो सिंध में बहुत ही कम बारिशें पड़ती हैं. दैट्स व्हाई द बलूचिस्तान सिंध इज बीइंग कॉल्ड द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान एज कंपेयर टू द पंजाब एंड द केपीके. सो जो दोनों मानसून हैं वो दोनों मानसून सिंध में बरसातें बहुत ही कम पड़ती है. सो द माउंटेन्स ऑन द वेस्ट सिंध are not high enough to catch the southwest monsoon current in the part of year and to prevent the cold blast from the Iranian plateau from entering the region in the other region. So if you look at the physiography of Sindh, we have a western highlands, we have a Khirthar mountain, a series of the mountains here, but these mountains not high enough. इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है कि ये जो क्लाउड्स है उनको पकड़ सके या इन हवाओं को पकड़ सके कि ये थोड़ा सा ठहराव में आए और सिंध में ज्यादा बारिश करे. मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ. दिस इज द साउथ वेस्ट मानसून, दिस इज द साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड दिस इज साउथ ईस्ट मानसून ब्रिंग द वाटर टू द पाकिस्तान फ्रॉम द अरेबियन सी एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. सबसे ज्यादा बारिश यहाँ से हमें मिलती है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिलती है. तो सिंध को अरेबियन सी से ये जो डायरेक्ट जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो सीधे, मगर क्योंकि सिंध की ज्योग्राफी ऐसी है, उसकी इतनी बड़ी हाइट नहीं है और उसमें इतने बड़े माउंटेन्स नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे भी इतनी ज्यादा बारिश नहीं मिलती. और ये बहुत ही कम सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें डायरेक्टली जो है ना यहाँ से बारिश मिले, साउथ वेस्ट मानसून से मिले. So the amount of rainfall in Sindh is mainly driven from monsoon with some sporadic patches in the winter because of western depression. So सबसे ज्यादा अगर वो जो बारिश सिंध में होती है उसमें भी ज्यादा बारिश जो है वो सिंध में वो समर मानसून से मिलती है. वो जो बारिश जो नॉर्थ से आती है साउथ की तरफ and mostly in the summer monsoon. Summer के टाइम में सिंध में बारिश होती है. So Sindh received the remarkable low amount of rainfall, only 5 inches in summer monsoon, while only 2 inches from the western depression in the winter. So Pakistan basically, even the Sindh has a two, sources of rainfall. One is the summer monsoon, another is the winter depression. So winter disturbance or depression. So दोनों में बहुत ही कम बारिश होती है. वो जो वेस्टर्न डिप्रेशन जो वेस्ट की तरफ से हवाएं चलती हैं, यानी ईरान की तरफ से जो सिंध में दाखिल होती है, वो भी इतनी पावरफुल नहीं होती कि सिंध को बारिशें दे, और वो जो समर मानसून है वो भी उनको भी तरह. सो यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं कि these are the shading showing the rate of the rainfall. तो देखिए ये जो ब्लू कलर saying over 1500 millimeter rainfall, more than 50. तो ये इलाके आप देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है. उसके बाद you can see the green shade, तो यहाँ पे बारिश होती है. This is 1000 to 100, 1300. जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, this is the Sindh province, यहाँ पे आप देखेंगे बलूचिस्तान और सिंध, they are almost dry. यहाँ पे तो कितनी बारिश होती है 100 to 200 मिलीमीटर. तो ये इलाका ये सिंध हो गया. तो 100, यहाँ तो उससे भी कम हो रही है बारिश. तो यहाँ पे देखें कि
कितनी कम बारिश हो रही है, लेस देन 100. सो 200 to 40, 200 to 400, these areas 200 to 400, and the rest is the 100 to 200. तो यानी कि अगर कंपेयर करें पूरे पाकिस्तान में देखें तो सबसे कम बारिशें जो है वो सिंध में पड़ती हैं. And most of the, the what is say, the reason of low rainfall in Sindh is because of its topography, its geography. कि सिंध जो है ना उसकी हाइट नहीं है, उसमें इतने बड़े माउंटेन्स भी नहीं है, और सिंध जो पंजाब है वो नॉर्थ में और ऊपर है, केपी केपी नॉर्थ में मगर ऊपर है, उनकी हाइट ज्यादा है और सिंध की हाइट कम है. एक तो यहाँ पे माउंटेन्स रीजन्स नहीं है, माउंटेन्स नहीं है तो हाइट कम है, स्लोप भी ज्यादा है, और दूसरा यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं, कोई बड़े फॉरेस्ट भी नहीं है ताकि सिंध को. सो मानसून रेन इज हाईली कंट्रीब्यूटेड फैक्टर इन फ्लड्स ऑफ द सिंध. The another is the temperature. So the Sindh is subtropical semi-arid region with high temperature prevailing most of the year, particularly in the summer. So as I told you earlier in the beginning, that Sindh is a subtropical semi-arid region, where we have a high temperature. If you compare the temperature, it's very high, and throughout the year, the average temperature is very high. यानी कि almost 8 से 9 महीने यहाँ पे जो टेम्परेचर वो हाई रहता है. तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ समर मंथ इज 35 सेंटीग्रेड. अगर एवरेज टेम्परेचर देखा जाए सिंध में जो है टेम्परेचर वो 35 सेंटीग्रेड है, एंड फॉर द विंटर इज 16 सेंटीग्रेड. अगर हम सिंध को यूरोप के साथ कंपेयर करें, इवन पाकिस्तान को यूरोपियन कंट्री के साथ, तो यहाँ पे दिस फिगर इज बीन कंसीडर एज अ समर टेम्परेचर, सॉरी द विंटर टेम्परेचर इन द यूरोप, और वो हमारे यहाँ जो है ना समर टेम्परेचर, ये समर टेम्परेचर है यूरोप में, और हमारे यहाँ ये विंटर टेम्परेचर. देखिए आप कितना फर्क है. सो however the temperature frequently rise to 45 centigrade and occasionally to the 50 centigrade summer. तो सिंध में ज्यादातर जो टेम्परेचर होता है वो 45 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, और कभी कभार तो 50 सेंटीग्रेड हो जाता है. यहाँ पे भी आप मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दे सकते हैं. तो दोनों में आप देखें सिंध में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है. ये इलाका देखें, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों में आप देखें सिंध में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है. ये शेडिंग जो है, शेडिंग आपको उसकी परसेंटेज बता रही है कि किस तरह जो है ना. अगर यहाँ पे आप रेड कलर को देखिए, वो भी देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है. यहाँ पे भी आए तो सबसे ज्यादा गर्मी सिंध में ही पड़ रही है. तो सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी ज्यादा पड़ रही है और उसके साथ बारिशें भी कम होती हैं. सो बाय द वे कीप इन माइंड most of these characteristics of rainfall or temperatures being produced by the topography of the Sindh. यानी कि सिंध की जो geography है उसका बड़ा influence है. So the highest temperature throughout the Pakistan are usually recorded in Shahid Benazir, which has been formerly we called Nawabshah, previously called Nawabshah district, and Sindh from May to August each year, which rises to about 48 degrees centigrade. तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है पाकिस्तान में वो नवाबशाह, शहीद बेनजीराबाद और सिंध में पड़ती है. दोनों जो हैं, एक सिंध का है इलाका और एक आप कह सकते हैं बलूचिस्तान के. तो सबसे ज्यादा गर्मी भी पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान में पड़ती है. ह्यूमिडिटी, I don't know whether you understand. Humidity is the percentage or ratio of water present in the air. यानी कि पानी में नमी, हवा में नमी कितनी, हवा में पानी कितना मौजूद है. Humidity also played a very important role in controlling the temperature. Sometimes also play a role in the rainfall also. So the highest average humidity, 75%, occur in the August, and the lowest December in the lower Sindh. जो लोअर सिंध में है दिसंबर में सबसे कम ह्यूमिडिटी होती है, और हाईएस्ट ह्यूमिडिटी वो अगस्त में पड़ती है 75%, in April also. So thus the weather is drier and hotter in the north than the south. अब इसका फर्क क्यों है? क्योंकि if you look at the upper of the Sindh, upper part of the Sindh, जो northern Sindh है, it is more drier as compared to the southern part of the Sindh. तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी में भी उसका फर्क पड़ता है. तो जो वेदर है वो नॉर्थ में वो ड्राई भी है और हॉट पे, और साउथ पे सारा. So the skies are generally clear and the frost is not uncommon. We have also other description of on the basis of
climate also, or we can say we can divide the Sindh, in different parts on the basis of climatic conditions. This has also been, called the natural geographical regions of the Sindh. I'm making a mind to, to have another video on this one. So to have a detailed information on that, which are the 5 natural geographical regions. यानी कि आप इसको नेचुरल रीजन्स भी कह सकते हैं, उसके साथ फिजियोग्राफिक डिविजन्स भी कह सकते हैं. तो देखें, अपर सिंध, which is called उत्तर, which is you can say Jacobabad or Shikarpur, the center of this place, so which is high temperature in summer and low in the winter. तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और जो है ना low in the winter, hot and dry. So upper Sindh is hot and dry. So mostly it has been the Shikarpur, Jacobabad, and Gotki. The central part, which is called the Vicholo, you can say Nawab Shah, Hyderabad. This can be the middle part of Vicholo. The high temperature alternate low temperature. So high to low, we have a very fluctuation there. Then the lower part, which is called the Lard in Sindhi language, lower part, which center could be the Karachi. So we have a mild summer. यहाँ पे आप देखें mild summer, not hot summer. So यहाँ पे जो summers हैं वो mild है, and winters are also been mild because of the influence of the Arabian Sea or the oceanic water. तो उसकी वजह से. Then we have a Thar or sandy desert, which is the rain-fed area where we have a days are very hot and nights are cooler because this area is very drier. That's why we have a fluctuation in the temperature. So दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात जो है वो ठंडी होती है because of the dryness, क्योंकि वहाँ पे dryness ज़्यादा होती है. Then we have a Kohestan or hilly tract, based on the mountains region, which is the continuation of extension of the Suleiman mountains. तो यहाँ पे क्या होता है? This is also rain-fed area. यहाँ पे भी कोई खास agriculture नहीं होती. अगर कुछ agriculture होती है जिस थर के इलाके में, तो यहाँ पे भी वो बरसाती पानी पे जो है ना वो होती है. So days are hot and nights are cool. Similar here. Both are the barren land. Both are the dry land. So it was all about the climate of Sindh. I hope you have a very good information regarding the climate of Sindh province. So I will come out with another video next time. So till then, take care of yourself. If you like my videos, please subscribe it and also share with your friends. Till then, see you very soon.